Question: why does Plato want the artists to be kept away from the ideal state? Discuss. Answer: Plato's philosophical treatise, The Republic, is a cornerstone of Western political and ethical thought. In The Republic, Plato constructs an ideal state, or polis, governed by philosopher kings and guided by the principles of justice and virtue. One of the intriguing aspects of this work is Plato's stance on the role of artists and art within his utopian society. He does not hold a favorable view of artists and wants to keep them away from his ideal state for several reasons. In this essay, we will explore these reasons step by step, offering a nuanced analysis of Plato's views on art, the potential threats he perceives from artists, and the implications of his ideas. Point 1. Imitation and mimesis. At the heart of Plato's skepticism about art is his concept of mimesis, which refers to the imitation or representation of the physical world in art. Plato contends that art is a mere imitation of reality and is thus twice removed from the ultimate truth. He argues that artists create copies of the physical world, which are themselves copies of the eternal forms or ideas. This process of imitation, in his view, can never capture the true essence of reality and is, therefore, misleading and deceptive. Plato believes that the human soul is naturally inclined towards seeking the truth in reality, and art, with its imitative nature, diverts people from this noble pursuit. Instead of contemplating the forms and aspiring to philosophical wisdom, individuals are lured into the illusory world of art, mistaking shadows for substance. For Plato, art becomes a distraction, deterring individuals from the pursuit of higher knowledge and virtue. In this way, he argues that artists contribute to the intellectual and moral decay of society. 2. Emotional manipulation. Plato is also concerned about the emotional and psychological impact of art on individuals. He contends that art has the power to arouse and manipulate the emotions of its audience. This emotional manipulation, in his eyes, can have detrimental effects on the soul. Plato believed that individuals should be in control of their emotions, governed by reason and guided by virtue. Art, especially tragic and dramatic forms, can arouse strong emotions such as pity and fear, which Plato saw as irrational and potentially disruptive. Plato's fear of art's emotional power is evident in his mistrust of poetry, particularly tragic poetry. He argues that tragic poets, by depicting characters in extreme emotional states, can influence and even corrupt the emotional balance of the audience. In The Republic, he famously states that the city should not allow the lies of poets that depict the gods and heroes as subject to such extreme passions, as this may negatively impact the moral and emotional development of the citizens. 3. Morality and imitation. Another aspect of Plato's criticism of art is its potential to undermine morality. He believes that art often portrays immoral actions, which can lead the audience to emulate or at least tolerate such behaviors. In The Republic, he expresses his concerns about the portrayal of immoral actions in literature, painting, and other forms of art. Plato argues that when individuals are exposed to these immoral depictions, they might become desensitized to them, leading to a degradation of moral values. For Plato, the ideal state is one in which citizens are guided by a strong sense of moral virtue. Art that celebrates or trivializes immoral conduct, in his view, undermines this moral framework. By excluding artists from the ideal state, he hopes to protect the moral integrity of the society and prevent the erosion of virtuous character. 4. The power of the imagination. Plato also criticizes art for its reliance on the imagination. He believes that the imagination is a faculty that distracts the soul from reality and truth. Imagination, according to Plato, is associated with the lower, appetitive part of the soul, which is prone to desires and impulses that can lead individuals away from reason and virtue. Art, with its reliance on the imaginative realm, stimulates the lower part of the soul, further contributing to moral and intellectual distractions. In the ideal state, Plato wants individuals to cultivate reason and intellect, suppressing the appetitive and emotional aspects of their nature. He perceives art as a hindrance to this goal, as it encourages the free play of the imagination and emotions, which he sees as incompatible with the pursuit of higher knowledge and wisdom. 5. Art as a distraction. Beyond its moral and emotional implications, Plato sees art as a form of entertainment and diversion. In his view,
the citizens of the ideal state should be focused on their duties and responsibilities, with no room for idle amusement. Art, with its capacity to captivate and entertain, can divert people's attention away from their civic and intellectual obligations. Plato's concern about art as a distraction is closely tied to his belief in the importance of a well-ordered, harmonious society. He believes that art, by enticing individuals away from their duties and responsibilities, can disrupt the social order and hinder the pursuit of the common good. Thus, he advocates for a society where art is marginalized to ensure the undivided attention of the citizens toward the welfare of the state. 6. Political subversion. Plato's unease with art is not limited to its impact on the individual soul but extends to its potential for political subversion. He believes that artists, including poets, have the ability to influence public opinion and shape the moral and political values of a society. In The Republic, he famously argues that the rulers of the state should closely regulate the content of art to prevent it from undermining the authority and stability of the government. Plato's suspicion of artists as potential instigators of social and political change is evident in his discussion of the noble lie. He advocates for the use of certain myths and stories in education and governance to manipulate the beliefs and values of the citizens. This manipulation, while intended to serve the interests of the state, highlights his concerns about the persuasive power of artistic narratives and their potential to challenge the established order. 7. The pursuit of truth in philosophy. At the core of Plato's critique of art is his emphasis on the pursuit of truth and wisdom through philosophy. He views philosophy as the highest form of knowledge, as it seeks to uncover the eternal truths and realities that lie beyond the world of appearances. In contrast, art deals with the world of appearances and, by its imitative nature, is incapable of accessing the higher realm of forms and ideas. For Plato, the ideal state should prioritize the pursuit of philosophy and the cultivation of philosopher kings who have knowledge of the forms. He believes that artists, with their focus on imitation and the sensory world, divert attention away from philosophy, preventing citizens from attaining the highest level of understanding and virtue. By keeping artists at a distance, Plato aims to create a society where the pursuit of philosophy and wisdom takes precedence over the distractions of art. 8. The censorship of art. To implement his vision of an ideal state free from the influence of artists in their potentially corrupting works, Plato suggests the need for strict censorship and regulation of art. He advocates for a system where the rulers of the state, who are philosophers, would carefully oversee and control the content of artistic expression. Plato's idea of censorship may seem authoritarian to modern sensibilities, as it involves limiting the freedom of artistic expression in the name of the greater good. However, from his perspective, the censorship is essential to protect the moral and intellectual integrity of the state. Plato's emphasis on the role of philosopher kings as the guardians of the state and as the arbiters of what is permissible in art underscores his commitment to preserving the ideal state from the potentially corrupting influence of art. 9. The role of art in Plato's Republic. While Plato's critique of art is severe, it is important to recognize that he does not completely dismiss the value of art. In The Republic, he acknowledges that certain types of art, such as music and poetry, can have a positive influence when they align with the moral and educational goals of the state. He suggests that art should be used as a tool for education, imparting moral values and shaping the character of the citizens. Plato also distinguishes between good and bad art, arguing that the state should encourage and promote only those artistic expressions that contribute to the moral and intellectual development of its citizens. In his ideal state, the content and purpose of art are carefully controlled to serve the greater goals of the community. 10. Contemporary relevance and critique. Plato's ideas about art and its role in society have sparked significant debate and discussion throughout the history of philosophy. While some aspects of his critique may seem outdated or overly authoritarian to modern readers, there are elements of his argument that continue to resonate in contemporary discussions about the role of art in society. Plato's concerns about the potential for art to shape public opinion, influence emotions, and even incite political change are still relevant in the context of today's media-saturated world. The power of art and media to shape public discourse and sway public sentiment remains a subject of contemporary concern. Furthermore,
The tension between the freedom of artistic expression and the desire to regulate it in the name of societal values and stability is an ongoing debate. Questions about censorship, artistic responsibility, and the impact of art on individuals and society continue to be discussed and contested in the modern era. In conclusion, Plato's desire to keep artists away from his ideal state is rooted in his philosophical vision of a society governed by reason and dedicated to the pursuit of truth and virtue. He sees art as a potential distraction, a source of emotional manipulation, and a moral hazard. His concerns about art's influence on individuals and the broader community lead him to advocate for strict censorship and control over artistic expression. While his ideas may appear restrictive and authoritarian to contemporary readers, they highlight enduring questions about the role of art in society and its potential impact on individuals and the common good. Plato's views on art in The Republic continue to invite reflection and discussion about the relationship between art, culture, and the ideal state. प्रश्न, प्लेटो कलाकारों को आदर्श राज्य से दूर क्यों रखना चाहता है? चर्चा करना। उत्तर, प्लेटो का दार्शनिक ग्रंथ द रिपब्लिक पश्चिमी राजनीतिक और नैतिक विचारों की आधारशिला है। द रिपब्लिक में प्लेटो एक आदर्श राज्य या पोलिस का निर्माण करता है, जो दार्शनिक राजाओं द्वारा शासित होता है और न्याय और सदाचार के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। इस काम के दिलचस्प पहलुओं में से एक प्लेटो का अपने यूटोपियन समाज में कलाकारों और कला की भूमिका पर रोक है। वह कलाकारों के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण नहीं रखता और कई कारणों से उन्हें अपने आदर्श राज्य से दूर रखना चाहता है। इस निबंध में हम चरण दर चरण इन कारणों का पता लगाएंगे। कला पर प्लेटो के विचारों, कलाकारों से उन्हें होने वाले संभावित खतरों और उनके विचारों के निहितार्थों का सूक्ष्म विश्लेषण पेश करेंगे। 1. नकल और नकल। कला के बारे में प्लेटो के संदेह के केंद्र में उनकी माइमेसिस की अवधारणा है, जो कला में भौतिक दुनिया की नकल या प्रतिनिधित्व को संदर्भित करती है। प्लेटो का तर्क है कि कला वास्तविकता की नकल मात्र है और इस प्रकार इसे अंतिम सत्य से 2 बार दूर किया जाता है। उनका तर्क है कि कलाकार भौतिक दुनिया की प्रतियां बनाते हैं, जो स्वयं शाश्वत रूपों या विचारों की प्रतियां हैं। उनके विचार में नकल की यह प्रक्रिया कभी भी वास्तविकता के वास्तविक सार को नहीं पकड़ सकती है और इसलिए भ्रामक और भ्रामक है। प्लेटो का मानना है कि मानव आत्मा स्वाभाविक रूप से सत्य और वास्तविकता की खोज की ओर झुकती है, और कला अपनी अनुकरणीय प्रकृति के साथ लोगों को इस महान लक्ष्य से भटकाती है। रूपों पर विचार करने और दार्शनिक ज्ञान की आकांक्षा करने के बजाय व्यक्ति छाया को पदार्थ समझकर कला की मायावी दुनिया में आकर्षित हो जाते हैं। प्लेटो के लिए कला एक विकर्षण बन जाती है, जो व्यक्तियों को उच्च ज्ञान और सद्गुणों की खोज से रोकती है। इस प्रकार उनका तर्क है कि कलाकार समाज के बौद्धिक और नैतिक पतन में योगदान करते हैं। 2. भावनात्मक हेरफेर। प्लेटो व्यक्तियों पर कला के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में भी चिंतित है। उनका तर्क है कि कला में अपने दर्शकों की भावनाओं को जगाने और उनमें हेरफेर करने की शक्ति है। उनकी नज़र में ये भावनात्मक हेरफेर आत्मा पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। प्लेटो का मानना था कि व्यक्तियों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, तर्क से नियंत्रित होना चाहिए और सद्गुण से निर्देशित होना चाहिए। कला, विशेष रूप से दुखद और नाटकीय रूप, दया और भय जैसी मजबूत भावनाओं को जगा सकते हैं, जिसे प्लेटो ने तर्कहीन और संभावित रूप से विघटनकारी के रूप में देखा। कला की भावनात्मक शक्ति के प्रति प्लेटो का डर कविता, विशेषकर दुखद कविता के प्रति उनके अविश्वास में स्पष्ट है। उनका तर्क है कि दुखद कवि पात्रों को अत्यधिक भावनात्मक स्थिति में चित्रित करके दर्शकों के भावनात्मक संतुलन को प्रभावित और यहाँ तक कि भ्रष्ट भी कर सकते हैं। द रिपब्लिक में उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा है कि शहर को कवियों के झूठ की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जो देवताओं और नायकों को इस तरह के चरम जुनून के अधीन चित्रित करते हैं, क्योंकि इससे नागरिकों के नैतिक और भावनात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 3. नैतिकता और अनुकरण। प्लेटो की कला की आलोचना का एक अन्य पहलू इसकी नैतिकता को कमजोर करने की क्षमता है। उनका मानना है कि कला अक्सर अनैतिक कार्यों को चित्रित करती है, जो दर्शकों को ऐसे व्यवहारों का अनुकरण करने या कम से कम सहन करने के लिए प्रेरित कर सकती है। द रिपब्लिक में उन्होंने साहित्य, चित्रकला और कला के अन्य रूपों में अनैतिक कार्यों के चित्रण के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। प्लेटो का तर्क है कि जब व्यक्ति इन अनैतिक चित्रणों के संपर्क में आते हैं, तो वे उनके प्रति असंवेदनशील हो सकते हैं, जिससे नैतिक मूल्यों का ह्रास हो सकता है। प्लेटो के लिए आदर्श राज्य वह है जिसमें नागरिकों को नैतिक सद्गुण की मजबूत भावना द्वारा निर्देशित किया जाता है।
उनके विचार में, जो कला अनैतिक आचरण का जश्न मनाती है या उसे तुच्छ समझती है, वह इस नैतिक ढांचे को कमजोर करती है। कलाकारों को आदर्श राज्य से बाहर रखकर, वह समाज की नैतिक अखंडता की रक्षा करने और सदाचारपूर्ण चरित्र की क्षरण को रोकने की आशा करता है। 4. कल्पना की शक्ति। प्लेटो कल्पना पर निर्भरता के लिए कला की भी आलोचना करता है। उनका मानना है कि कल्पना एक ऐसी क्षमता है जो आत्मा को वास्तविकता और सच्चाई से विचलित करती है। प्लेटो के अनुसार, कल्पना आत्मा के निचले, क्षुधावर्धक भाग से जुड़ी है, जो इच्छाओं और आवेगों से ग्रस्त है, जो व्यक्तियों को तर्क और सद्गुण से दूर ले जा सकती है। कला, कल्पनाशील क्षेत्र पर निर्भरता के साथ, आत्मा के निचले हिस्से को उत्तेजित करती है और नैतिक और बौद्धिक विकर्षणों में योगदान करती है। आदर्श स्थिति में, प्लेटो चाहता है कि व्यक्ति अपने स्वभाव के क्षुधावर्धक और भावनात्मक पहलुओं को दबाते हुए तर्क और बुद्धि का विकास करे। वह कला को इस लक्ष्य में बाधा के रूप में देखता है, क्योंकि यह कल्पना और भावनाओं के मुक्त खेल को प्रोत्साहित करती है, जिसे वह उच्च ज्ञान और ज्ञान की खोज के साथ संगत मानता है। 5. ध्यान भटकाने वाली कला। इसके नैतिक और भावनात्मक निहितार्थों से परे, प्लेटो कला को मनोरंजन और मनोरंजन के रूप में देखता है। उनके विचार में, आदर्श राज्य के नागरिकों को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बेकार मनोरंजन के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कला, मोहित करने और मनोरंजन करने की अपनी क्षमता से लोगों का ध्यान भटका सकती है। Question. Examine the purpose spontaneity, emotions and personality serve in Wordsworth's theory of poetry. Answer. William Wordsworth, a prominent figure in the Romantic literary movement, crafted a distinctive theory of poetry that placed a significant emphasis on spontaneity, emotions, and personality. In his Preface to Lyrical Ballads, 1800, Wordsworth articulated these elements as fundamental to the poetic experience. In this examination, we will delve into the step-by-step exploration of the purpose that spontaneity, emotions, and personality serve in Wordsworth's theory of poetry. 1. Spontaneity. Wordsworth's theory of poetry begins with a celebration of spontaneity. For him, poetry was not a rigid, predetermined structure adhering to strict rules, but rather a spontaneous overflow of powerful feelings. This emphasis on spontaneity served to break away from the conventions of 18th-century neoclassical poetry, which often adhered to formal rules of structure and language. By embracing spontaneity, Wordsworth aimed to create a more organic and genuine form of poetry. 2. Breaking away from neoclassical conventions. Spontaneity, in Wordsworth's view, was a tool to liberate poetry from the artificial constraints of the neoclassical tradition. This departure from established rules allowed Wordsworth to connect with the common people by portraying the authentic experiences of everyday life. His rejection of formal conventions was a deliberate move towards democratizing poetry, making it more accessible and relatable to a broader audience. 3. Capturing the essence of the moment. Spontaneity, according to Wordsworth, was the key to capturing the essence of a moment. He believed that poetry should be an immediate and unmediated response to the world's beauty and complexity. This focus on the spontaneity of emotion allowed Wordsworth to convey the immediacy of human experiences, making his poetry a vivid and authentic representation of the moments he sought to immortalize in verse. 4. Emotions. In Wordsworth's theory of poetry, emotions played a central role. He asserted that poetry should be a vehicle for conveying the poet's emotions and eliciting a corresponding emotional response from the reader. For Wordsworth, genuine and profound emotions were essential in capturing the true spirit of a moment or experience. This emphasis on emotions aimed to create a deep and lasting connection between the poet and the reader. 5. Shared emotional experience. Wordsworth believed that by expressing his own emotions honestly and passionately, he could establish a shared emotional experience with the reader. This shared emotional resonance was a key element of the poetic experience, fostering a connection not only between the poet and the reader but also between individuals. The power of emotions, in Wordsworth's theory, lay in their ability to transcend individual experiences and create a collective understanding of the human condition. 6. Nature and emotional well-being. Furthermore, Wordsworth's focus on emotions was closely tied to his belief in the redemptive and transformative power of nature. He saw nature as a source of solace and inspiration capable of eliciting intense emotional responses. Through his poetry, Wordsworth aimed to convey the healing and elevating influence of nature on the human spirit.
By doing so, he sought to encourage readers to embrace a deeper connection with the natural world, promoting a sense of spiritual renewal and emotional well-being. 7. Personality. In Wordsworth's theory, personality played a distinctive role. He believed that poetry should reflect the individual personality, experiences, and unique perspective of the poet. This emphasis on personality was a departure from the artificial, poetic personas prevalent in the 18th century. Wordsworth aimed to write in his own voice, without the mask of a fabricated persona, fostering authenticity and direct communication of the human experience. 8. Authenticity and rejecting poetic personas. Wordsworth's concept of personality underscored the rejection of artificial poetic personas that characterized much of the literature of his time. He insisted that every great and original writer must create the taste by which they are relished. This suggested that the poet's unique personality and creative vision should shape their work, fostering authenticity and a genuine expression of thoughts and emotions. 9. Individual perspective. Personality, according to Wordsworth, was also closely tied to the idea of the poet as a visionary and a seer. He believed that poets had a special sensitivity to the world, allowing them to perceive the beauty and significance in ordinary moments. This visionary quality was intimately connected to the poet's personality and served as a source of inspiration for their poetry. Wordsworth considered the poet to be a sort of prophet who could reveal profound truths about life and nature. 10. Connection with the common people. In addition to fostering authenticity, personality in Wordsworth's theory of poetry emphasized the importance of individual perspective. He believed that each person's unique viewpoint was valuable, and poetry could serve as a medium for individuals to share their distinct views of the world. This approach contributed to Wordsworth's focus on the common people and their everyday experiences, recognizing the richness and depth of these often overlooked perspectives. In conclusion, Wordsworth's theory of poetry, rooted in spontaneity, emotions, and personality, aimed to redefine the poetic experience. Spontaneity allowed for a departure from rigid conventions, while emotions served as the conduit for a deep connection between the poet and the reader. Personality, emphasizing authenticity and individual perspective, ensured a genuine and unique expression of the human experience. Together, these elements form the foundation of Wordsworth's revolutionary approach to poetry, leaving a lasting impact on the literary landscape for generations to come. प्रश्न, वर्ड्सवर्थ के काव्य सिद्धांत में सहजता, भावनाओं और व्यक्तित्व के उद्देश्य की जांच करें। उत्तर, रोमांटिक साहित्यिक आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति विलियम वर्ड्सवर्थ ने कविता का एक विशिष्ट सिद्धांत तैयार किया, जिसमें सहजता, भावनाओं और व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया। अपने प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स 1800 में वर्ड्सवर्थ ने इन तत्वों को काव्यात्मक अनुभव के लिए मौलिक बताया। इस परीक्षा में हम उस उद्देश्य की चरण दर चरण खोज करेंगे जो वर्ड्सवर्थ की कविता सिद्धांत में सहजता, भावनाएं और व्यक्तित्व काम करते हैं। 1. सहजता। वर्ड्सवर्थ का कविता सिद्धांत सहजता के उत्सव से शुरू होता है। उनके लिए कविता कठोर नियमों का पालन करने वाली एक कठोर, पूर्व निर्धारित संरचना नहीं थी, बल्कि शक्तिशाली भावनाओं का एक सहज प्रवाह था। सहजता पर इस जोर ने 18वीं सदी की न्यूक्लासिकल कविता की परंपराओं को तोड़ने का काम किया, जो अक्सर संरचना और भाषा के औपचारिक नियमों का पालन करती थी। सहजता को अपनाकर वर्ड्सवर्थ ने कविता का अधिक जैविक और वास्तविक रूप तैयार करने का लक्ष्य रखा। 2. नवशास्त्रीय परंपराओं से नाता तोड़ना। वर्ड्सवर्थ के विचार में सहजता कविता को नवशास्त्रीय परंपरा की कृत्रिम बाधाओं से मुक्त करने का एक उपकरण था। स्थापित नियमों से इस विचलन ने वर्ड्सवर्थ को रोजमर्रा की जिंदगी के प्रामाणिक अनुभवों को चित्रित करके आम लोगों से जुड़ने की अनुमति दी। औपचारिक सम्मेलनों की उनकी अस्वीकृति कविता को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक जानबूझकर उठाया गया कदम था, जिससे यह व्यापक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ और प्रासंगिक बन गई। 3. पल के सार को पकड़ना। वर्ड्सवर्थ के अनुसार सहजता एक क्षण के सार को पकड़ने की कुंजी थी। उनका मानना था कि कविता दुनिया की सुंदरता और जटिलता के प्रति तत्काल और बिना मध्यस्थता की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। भावना की सहजता पर इस फोकस ने वर्ड्सवर्थ को मानवीय अनुभवों की तात्कालिकता को व्यक्त करने की अनुमति दी, जिससे उनकी कविता उन क्षणों का एक ज्वलंत और प्रामाणिक प्रतिनिधित्व बन गई, जिन्हें उन्होंने कविता में अमर बनाने की कोशिश की थी। 4. भावनाएं। वर्ड्सवर्थ के कविता सिद्धांत में भावनाओं ने केंद्रीय भूमिका निभाई।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कविता को कवि की भावनाओं को व्यक्त करने और पाठक से तदनुरूप भावनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने का माध्यम होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ के लिए किसी क्षण या अनुभव की सच्ची भावना को पकड़ने के लिए वास्तविक और गहन भावनाएं आवश्यक थीं। भावनाओं पर इस जोर का उद्देश्य कवि और पाठक के बीच गहरा और स्थायी संबंध बनाना है। 5. साझा भावनात्मक अनुभव। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि अपनी भावनाओं को ईमानदारी और लगन से व्यक्त करके वह पाठक के साथ एक साझा भावनात्मक अनुभव स्थापित कर सकता है। ये साझा भावनात्मक अनुनाद काव्य अनुभव का एक प्रमुख तत्व था, जो न केवल कवि और पाठक के बीच बल्कि व्यक्तियों के बीच भी संबंध को बढ़ावा देता था। वर्ड्सवर्थ के सिद्धांत में भावनाओं की शक्ति व्यक्तिगत अनुभवों को पार करने और मानवीय स्थिति की सामूहिक समझ बनाने की उनकी क्षमता में निहित है। 6. प्रकृति और भावनात्मक कल्याण। इसके अलावा वर्ड्सवर्थ का भावनाओं पर ध्यान प्रकृति की मुक्तिदायक और परिवर्तनकारी शक्ति में उनके विश्वास से निकटता से जुड़ा हुआ था। उन्होंने प्रकृति को सांत्वना और प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा, जो तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने में सक्षम है। अपनी कविता के माध्यम से वर्ड्सवर्थ का उद्देश्य मानव आत्मा पर प्रकृति के उपचारात्मक और उन्नत प्रभाव को व्यक्त करना था। ऐसा करके उन्होंने पाठकों को प्राकृतिक दुनिया के साथ गहरा संबंध अपनाने, आध्यात्मिक नवीनीकरण और भावनात्मक कल्याण की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहा। 7. व्यक्तित्व। वर्ड्सवर्थ के सिद्धांत में व्यक्तित्व ने एक विशिष्ट भूमिका निभाई। उनका मानना था कि कविता में कवि के व्यक्तिगत व्यक्तित्व, अनुभव और अद्वितीय दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करना चाहिए। व्यक्तित्व पर यह जोर 18वीं सदी में प्रचलित कृत्रिम काव्यात्मक व्यक्तित्व से हटकर था। वर्ड्सवर्थ का उद्देश्य मनगढ़ंत व्यक्तित्व के मुखौटे के बिना मानवीय अनुभव की प्रामाणिकता और प्रत्यक्ष संचार को बढ़ावा देना, अपनी आवाज में लिखना था। 8. प्रामाणिकता और काव्यात्मक व्यक्तित्व को अस्वीकार करना। वर्ड्सवर्थ की व्यक्तित्व की अवधारणा ने कृत्रिम काव्यात्मक व्यक्तित्वों की अस्वीकृति को रेखांकित किया, जो उनके समय के अधिकांश साहित्य की विशेषता थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक महान और मौलिक लेखक को वह स्वाद पैदा करना चाहिए जिससे उनका आनंद लिया जा सके। इसने सुझाव दिया कि कवि के अद्वितीय व्यक्तित्व और रचनात्मक दृष्टि को उनके काम को आकार देना चाहिए, प्रामाणिकता और विचारों और भावनाओं की वास्तविक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। 9. व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य। वर्ड्सवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व भी दूरदर्शी और द्रष्टा के रूप में कवि के विचार से निकटता से जुड़ा हुआ था। उनका मानना था कि कवियों में दुनिया के प्रति एक विशेष संवेदनशीलता होती है, जिससे उन्हें सामान्य क्षणों में सुंदरता और महत्व का एहसास होता है। ये दूरदर्शी गुण कवि के व्यक्तित्व से गहराई से जुड़ा हुआ था और उनकी कविता के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करता था। वर्ड्सवर्थ कवि को एक प्रकार का भविष्यवक्ता मानते थे, जो जीवन और प्रकृति के बारे में गहन सत्य प्रकट कर सकता था। 10. आम लोगों से जुड़ाव। प्रामाणिकता को बढ़ावा देने के अलावा वर्ड्सवर्थ के कविता सिद्धांत में व्यक्तित्व ने व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति का अद्वितीय दृष्टिकोण मूल्यवान है और कविता व्यक्तियों के लिए दुनिया के बारे में अपने विशिष्ट विचार साझा करने के माध्यम के रूप में काम कर सकती है। इस दृष्टिकोण ने वर्ड्सवर्थ को आम लोगों और उनके रोजमर्रा के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने में योगदान दिया, जिससे अक्सर नजरअंदाज किए गए इन दृष्टिकोणों की समृद्धि और गहराई को पहचाना गया। निष्कर्षतः वर्ड्सवर्थ का कविता सिद्धांत, जो सहजता, भावनाओं और व्यक्तित्व में निहित है, का उद्देश्य काव्यात्मक अनुभव को फिर से परिभाषित करना है। सहजता ने कठोर परंपराओं से हटने की अनुमति दी, जबकि भावनाएं कवि और पाठक के बीच गहरे संबंध के लिए माध्यम के रूप में काम करती थीं। व्यक्तित्व, प्रामाणिकता और व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर जोर देते हुए मानवीय अनुभव की वास्तविक और अनूठी अभिव्यक्ति सुनिश्चित करता है। साथ में इन तत्वों ने कविता के प्रति वर्ड्सवर्थ के क्रांतिकारी दृष्टिकोण की